on one question answer. Figures of speech. Let's discuss. First question: when did the poet see the daffodils? When did the poet see the daffodils? Question लिखिए दरकार नहीं, डायरेक्ट रिपोर्ट करा आंसर को लिखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 1 रा आंसर लेकर ओके ठीक है देखिए तो स्पीच भी कंप्लीट कर रहा है William Wordsworth. Question number 1 answer. William Wordsworth. Sir, the beautiful daffodils. Sir, the beautiful daffodils. When he was wandering, when he was wandering, when he was wandering, W-A-N-D-E-R-I-N-G, wandering, lonely, wandering lonely as a cloud, as a cloud. Since a poet laureate, since a poet laureate, since a poet laureate, poet laureate, L-A-U-R-E-A-T-E, poet laureate, since a poet laureate, a poet laureate, L-A-U-R-E-F-T-E, poet laureate, his analysis was very exciting. His analysis was very exciting, as well as heart touching, as well as heart touching. Second question. The question is, where did the poet see the daffodils? Answer letter. The poem Daffodils. The poem Daffodils by William Wordsworth. By William Wordsworth. The poem Daffodils by William Wordsworth is a legacy of nature. Is a legacy. Is a legacy of nature and natural creation. So the poet saw the daffodils. The poet saw the daffodils besides the lake,
and beneath the trees. Besides the lake and beneath the trees. Beneath, B-E-N-E-T-H, beneath the trees. Question number 3. Question number 3 का answer लेगा. The poet was wandering. The poet was wandering. The poet was wandering in the English countryside. In the English countryside. He saw thousands of daffodils. He saw thousands of daffodils fluttering and dancing. Fluttering, F-L-U-T-T-E-R-I-N-G. Fluttering and dancing beneath the trees. Beneath the trees. And beside the lake. The daffodils appeared to be appeared to be dancing in the strong breeze. এটা দিলা পেলে রিয়েলি গোটে fill in the blanks তাহলে তুমি আন্ডারলাইন করে নিও আমি এই যে টোটালি সব প্যারাগ্রাফ ডিক্টেট করলে ওয়ান্ডারিং তলে আন্ডারলাইন করো ওয়ান্ডারিং তারপরে সেকেন্ড সেন্টেন্স রে লিখি নিও ড্যান্সিং সরি ড্যাফোডিলস সেকেন্ড হি saw thousands of daffodils তো আন্ডারলাইন করো dancing beneath the trees তলে আন্ডারলাইন করো and beside the lake पर underline करो last sentence रे appeared to be dancing पर underline करो in the strong breeze अपन underline करेगा after nice हालांकि question answer एना डिक्टेट करू छे जो मैंने लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास तुम्हारा इंग्लिश क्लास आज फर्स्ट क्लास लगो मोर डैफोडिल चैप्टर टा बुझिना केते बेले ए जो क्लास थिबो अध घंटा पूर्व एलियर पळे आसीबो तुमको डिटेल्स बुझाई देछि वर्ड मीनिंग मते कारण डायरेक्ट तुम आंसर लिखुछ जहां लगे तुमको अवगत रहइबो अपरे परे काई दिना सरला परे हमें गोटे उत्तर के टेस्ट करबा चैप्टर तुम जते शीघ्र टॉपिक बुझिना ओके हमर क्वेश्चन नंबर 4 What does the poet compare the daffodils with? What does the poet compare the daffodils with? Poet daffodils को कहाँ से तो compare करके ले? Stars. The poet of nature. Answer. The poet of nature. Brings a vivid comparison. Vivid means lively. A vivid comparison between two natural objects.
They were the daffodils, the daffodils and the stars. Here, full stop or letter here, the comparison is enchanting. Is enchanting. 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 To evaluate. Enchanting to evaluate. Enchanting माने चमत्कारी है. Enchanting to evaluate the poetic temperament. The poetic temperament. Question number 5. What resemblance does the poet find between the stars and the daffodils? The poem Daffodils was a manifestation. Was a manifestation of a legendary poet. Manifestation of a legendary poet. Poet William Wordsworth. In this poem, the poetic analysis is that the stars shine in the sky. The stars shine in the sky while the daffodils shine in the lake. Shine in the lake. The stars are many and continuous. The stars are many and continuous. Many and continuous. The daffodils are in a similar number. And proper nature. Question number 6. What does the poet say about the number of flowers? Question number 6. Poet William Wordsworth perfectly uses different types of figures of speech to bring clarity
clarity, for explanation, for explanation. So he says that there were 10,000. There were 10,000 daffodils found near the lake. Near the lake. L-A-K-E. Near the lake. At a glance. Near the lake at a glance. Question number 7. Where the flowers? In the poem Daffodils, question number 7 answer like that. In the poem Daffodils, William Wordsworth provided a real analysis of a daffodil's representation. So far as is visual representation is concerned, visual representation is concerned, the flowers were along the margin of a bay, along the margin of a bay, P-A-Y, margin of a bay, stressed, S-T-R-E-T-C-H-E-D, stressed in a never-ending line, stressed in a never-ending line. Question number 8. Which of the two dance more sprightly? So wait for the daffodils. In the poem Daffodils, William Wordsworth always uses personal experience about natural creations,
According to him, in the poem Daffodils, the daffodils he stressed that the daffodils dance more sprightly. The daffodils dance more sprightly than the waves. More sprightly than the waves. Question number 9. How does the poet feel while looking at the daffodils? Question number 9 answer letter. In the poem, the daffodils poet of nature, poet of nature, William Wordsworth describes about wealth, in two perspectives, perspective telling, PERSPECTIVES. Two perspectives like material and spiritual. While looking at the daffodils, the poet felt that the poet felt that the dancing of the daffodils brought him dancing of the daffodils brought him immense wealth. Means sufficient wealth. IMMENS, immense wealth. WEALTH. Question number 10. What happened to the poet when he lies on his couch? Poet William Wordsworth gives his personal experience to presume presume human mind
In the present, materialistic world. In the present materialistic world. In the present materialistic world. Materialistic world. Full stop. When the poet lies on his couch, couch. The picture of the daffodils class upon class FLASH class upon is inward eye. Class upon is inward eye. Question number 11. Mention the two moods of the poet. In the poem Daffodils, from the beginning, we find the poet was moving. The poet was moving to a bliss. To a bliss. BLISS, bliss of solitude. 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 Hence, hence, the two moods of the poet. Two moods of the poet found in the poem. Where vacant and pensive mode. Vacant and pensive. PENSIVE. Pensive mode. Pensive mode. Mood. Hey, question number 12. Question number 12. What does the poet feel when he remembers the sight at the daffodils?
The site of the daffodils, no site of name. The site of the daffodils, the site of the daffodils is IGHT. The site of the daffodils makes the poet remarkable and illustrious, remarkable and illustrious in the literary world. In the literary world. Literary world. When the poet remembers the president of the daffodils, the president of the daffodils is a heart, his heart fills with the pleasure and dances with them. And dances with them. There. Question number 14 के देखिला. Question number 14. Do you find a rhyme scheme in the poem? The rhyming scheme of the first stanza is FB. A represent for the cloud, B hela kon amra clouds. Second hela crowd. B hela hills and daffodils. Ending with a rhyming couplet, CC. B is similar in other three stanzas, or do you find any variation? A rhyme scheme जो राज पिले, I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Play, arrow, this sound pronunciation को base करके देखने या first point रे हमर रहला ending रे cloud a रे b रे रहला कोन hills और hills आसिला c रे देखने या कोन आसिला कोन repetition होची crowd तापर आसीगला कोन daffodils हमने fb pronunciation को base करके देखो last रे होची cloud पुनी हमर सेकंड रे रहला b रे रहला कोन hills and hills पुनी पळे आसे फर्स्ट को क्राउड पुनी आसे गला daffodils तेनु एबी आसी गला तापर देखि जे मिले beneath the trees in the breeze तेनु आर प्राइमरी स्कैन कोन आछि देखि लगी सापरे हमें एटा भी वर्तमान डिस्कशन करिबा मु केते एग्जांपल देखि हमें कंसीडरेशन करिबा क्वेश्चन नंबर 15 और एंडिंग गुडा भी मध्य रहउची जोटा से देचन जे हमको पर्टिकुलरली सीसी कपलेट रे जोटा में कहउचे ट्रीज प्रोनाउंसिएशन देखो पूरा मिसी जाउची ट्रीज ब्रीज तेनो एबी सीसी एबी सीसी
जानी होची ना नहीं अरे बुक अछि समस्त कर हां बुक अछि जानी परला तो अरे खाली वर्ड फॉर्मेशन देखो क्लाउड एंडिंग असेला हिल्स अच्छा पुणे ऐसे गला हमर क्राउड डैफोडिल्स हमर एबी एबी लास्ट पॉइंट देखो ट्रीज ब्रिज एबी एबी डॉक्टर टाइप इले हमर क्वेश्चन नंबर 15 देखो how many times the word dance repeated in this poem in which line does it show the happiness and liveliness of the flowers केते थारो डांस यूज करा जाय छे पोएम रे पर्टिकुलरली देखिनिया और बोर हो छी Calamity कौन करेगा how many times the word dance is repeated in this poem 4 times कौन होची ना नहीं फर्स्ट को हमें कौन कहो once सेकंड को twice थर्ड को thrice फोर को स्टार्ट होगा times हेलाकि टाइम्स होगा बट नॉट 100 पुनी चेंज हेजी ताले पिले हमें देखिबा हमर 16 नंबर आ गोटे कहचंदी in which line does it show the happiness and liveliness of the flowers फ्लावर मानकर हैप्पीनेस का कोड भी एक्सप्लेन करा जाय छी हैप्पीनेस संजा देखो the waves beside them danced but they outdid the sparkling waves in glee a poet could not but be gay in such a jocund company I gazed and gazed but little thoughts what will the show to me had brought so for us we consider our the last line ro stanza 2 रे रही particularly our जोटा हमें कहूचे the flash upon that inward eye which is the bliss of solitude जोटा हमको देइछि कोन की हैप्पीनेस देइछि एक ने अब 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance एटा भी शो करूनी की से गोटा आंसर रहइबो हमर मन रख particularly stanza 2 रो जो लास्ट लाइन रहउछि दुईटा 10,000 saw I at a glance tossing their heads in sprightly dance तापर क्वेश्चन रहउछि पिले in which line does it creates a sense of a harmonious relationship between the daffodils and the waves daffodil और wave भीतर कोठी harmonious relationship रहउछि पिले कितना नंबर देखो को लाइन Acting now 14 बुक समस्त पाकर अछि त पिले तापर पिले in which line does this harmonious relationship include the poet himself poet को को लाइन रे इंक्लूड करा जाय छी
Full line rate. 15 message but perhaps a poet could not but be gay. Then is also a joke company. After Pilam Rashi Dauji relating to figures of speech. What figures of speech do you find in this poem? Students, you must be knowing about figures of speech. Anybody else? How the chapter relating to figures of speech and discussion kale automatically example भी cite करिबा. Figures of speech कौन? What do you mean by figures of speech? What are those figures of speech? ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ତମେ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିଥିବ ପିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ରେ ଆମର ଥିଲା ଗ୍ରାମାର ବୁକରେ ଅଳଙ୍କାର ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ରୂପକ ଉପମା ଉପମା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ପାଠ ପଢିଥିବ 10th ଲେଭେଲ ରେ इंग्लिश रे सेभଳି फिगर्स ऑफ स्पीच एटा तो सीबीएसई रे नथिला आईसीएसई चैप्टर रे थिबो बोले कि आईसीएसई रे अछि कि नै भी थिला तेनु जदी दिला भी मोर टोटली नोट पता तो एक्सप्लेन कर देउ छी लेख फिगर्स ऑफ स्पीच देख figures of speech underline कर लेना ये figure of a speech ये figure of a speech is ornamental the figure of a speech is ornamental use of words ornamental use of words first it is used to increase it is used to increase the effectiveness of words the effectiveness of words in a sentence example there are four pillars there are four pillars P-I-L-L-A-R-S there are four pillars in this building the word pillars is used in its ordinary sense the word pillars is used in its ordinary sense but when we say failure is the pillar of success failure is the pillar of success the word pillar is used in figurative sense is used in figurative
FIGURATIVE, figurative sense. Try to understand, students. Our human thinking imagination रे दीटा proposal आसे गोटे होची real आ गोटे हला unreal तमे जेतले पिले जाउछ पर्टिकुलरली मिरर आगु तमर जो रिफ्लेक्शन होची सेटा होची रियल रिफ्लेक्शन किंतु आमे जेते बडे कथा रे कहूछु अनरियल रिफ्लेक्शन जेते बडे तमे देखिबो मैक्सिमम तो गोटे होउची ओडिया मीडियम पिलाटी अछ जेते बडे गोटे राजांग बाबदरे किछि कुहा जाय पीराधि वीरवर कोटि नव कले तो केते कोन कहि राजा को कोन करा जाय अतिरंजित करा जाय सेगुडा तो सब हम कथा पूर्व गोटे गोटे फिगरेटिव माने हमें ताको हाइलाइट कर एक हम एग्जांपल देबी हमें कहूचे इस बिल्डिंग has 4 pillars ये बिल्डिंग रे चारिटा खंभ एटा नॉर्मल सेंस रे यूज करी किंतु ताकू जदि हमें पूर्ण कहबा से पिलर को यूज करबा failure is the pillar of success एटा को अल्टरनेटिव इंग्लिश रे पढी दिला सेकंड ईयर एग्जाम रे एबे what is the opposition of failure opposition का सक्सेस ए तीन दिन धर जो एग्जाम दिला था तो प्रत्येक मन रख हम जो एग्जाम देबो को पैटर्न रो क्वेश्चन आछबो इट इज एनालिटिकल सब बेले प्रत्येक सेंटेंस प्रत्येक टॉपिक का गो टू द बुक्स मिनिटली जते बही की रीडिंग करिवो तमे तमरो जस्टिफाई करिवो हाउ यू आर लर्निंग अबाउट हमें कहि देले कोटा पढी जीवनी यू मस्ट हैव टू सर्च थ्रू तुमको भलो भाबरे सर्च करिया पड़िबो तो पिले हमें कहबा फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस तमने कोन जान सुनि हमके देलेबे देला करे किबा कोन से जगह असफल हेले हम गोटे प्रकार लेसन आछे हमें ताको सिखिबा को चेष्टा करू यही वर्ड का देखो फर्स्ट सेंटेंस रे जोटा यूज हैला नॉर्मली बिल्डिंग सेंस में चारटा पिलर एटा गोटे जस्ट पोजीशन को शो अप कला किंतु सेकंड रे हमें जते बेले कहले फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस से पिलर का माने कोन इट इज वन टाइप ऑफ डिटरमिनेशन इट इज वन टाइप ऑफ आयरन विल इट इज वन टाइप ऑफ आई मीनिंग कोन प्रिजम्पशन इट इज वन टाइप ऑफ बूस्ट टुवर्ड्स ह्यूमन पोटेंशियलिटी तमरा कोठी गोटा अनसक्सेस हेलो ताको रेक्टिफाई करला तेनो करी मन रखो सेकंड पॉइंट रे जोटा यूज करले हमें फेल्योर को सेटा गोटा फिगरेटिव मान रे यूज करबो आ गोटे पिला मु कहबी तमे ऑलरेडी जानि दिबो ओडिया लिटरेचर बाबत रे मु ओडिया लिटरेचर पढिबा कथा मेबी फिर भी ओडिया मीडियम पिला अछो बोली तमे शब्दवालाकर अर्थकालाकर तापर गोटे गोटे डेफिनेशन पिला तबे जो डेफिनेशन पिला एटी मो एनालिसिस करबेनी हमें फिगरेटिव सेंस रे खाली देखिनियो फिगर्स ऑफ स्पीच कोन करे गोटे गोटे सेंटेंस रे इंपोर्टेंस को बढ़ाई दिए समस्त कोन करबो पिला लेखिबा किंतु तादे वेरी करिवो मु कहबी गोटे ओट कलेक्शन को ओएनटीपी जाउछ मनैला गोटे ओट कलेक्शन को जाउछ कोठी की ओएनटी चबरे मु सेठी गोटे वर्ड यूज करबी मरुभूमि रा जहाज कलेक्शन को ओएनटी चबरे मरुभूमि रा जहाज की एठी ओटर पोटेंशियलिटी बढ़ु नहीं भाबिनियो मु कहबी रोहित शर्मा इंडिया को जितैले मु कोन कहबी हिट मैन रोहित शर्मा इंडिया को जितैले अतो फरक नहीं अब तो कुछ नहीं हमें जाना तो पोटेंशियलिटी के हाईलाइट करबा इट इज यूज्ड इन डिफरेंट सेंसेस डिफरेंट फॉर्म्स हमें जते प्रत्येक डेफिनेशन दे एग्जांपल दबा वेराइटी एग्जांपल आसीबा हमर आउट के कोडिफिकेशन आसीबा कांसेप्ट क्लियर हो लेफ्ट क्लास लेखो simile 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 लैटिन टर्म सिमिलो हमें को कहते कोन सिमाइल अधिकांश प्रोनाउंसिएशन करो simile कोन जोटा तमे लिखिबो ओके सिमिली अंडरलाइन कर लेबो जोटा सिमिल रो ओडिया कोन कहला हमर उपमा ओडिया प्ले तो बहुत पिला ओडिया ना कामर बोली गलो हां कंसीडर करो वर्तमान समस्त इंग्लिश मीडियम पिला और लाइक इट इज ए फिगर ऑफ अ कंपैरिजन सिमिल अंडरलाइन कर लेखा इट इज ए फिगर ऑफ अ कंपैरिजन in which two these similar things are compared
are compared, compared, compared explicitly, 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 for a point of a similarity. Say pointer like a full stop there. The simile is usually introduced. The simile is usually introduced by words. I can like, comma, as is, as, comma, such, just as, etc. देखो बिले जो सेंटेंस रे पर्टिकुलरली लाइक लागि दिबो, आज लागि दिबो, सच आज लागि दिबो, जस्ट आज लागि दिबो, ताको हम कोन कहबा सिमिली बोलबा। केतिकरा जानिया पड़िबो गोटे सेंटेंस रे जेते बेले when we find such words like as, such as, just as in a sentence, we call it as simile. Example, your face is as a book. Your face is as a book where man can read, strange letters. Man can read strange letters. विलियम शेक्सपियर को बहुत लाइक करे बोलती ऑथर दिके विचार को पढ़े जो पिले योर फेस इज एज ए बुक पिले हम जीवन रे सबथार इंपोर्टेंस होची कार फेस रो इंपोर्टेंस नहीं एक मैथमेटिक्स रो कार फेस रो अधिक है फेस रो दिया प्लेस का टिके होत ना डिजिटल ऑर्डर रे विलियम शेक्सपियर जानि थिबो the legendary, I mean comic relating to English literature. से प्रत्येक सेंस रे डबल मीनिंग सेंस रे यूज करिथान हमर इंग्लिश रो ग्रामर रे डबल कंपैरेटिव यूज करबाटा वर्ड रे समझते कहछन मिस्टेक किंतु विलियम शेक्सपियर नेचुरली ग्रामर बहिले सब बेले डबल कंपैरेटिव लगे हम के कार्य लोक नै सो स्टूडेंट्स लिसन खाली एटी मन रखा योर फेस इज आज ए बुक एटी कंपैरिजन लागिला नहीं कोन बुझै छी आज गोटे सेंटेंस रे जते बडे आज लागिला ताको हम कोन कहबा तमे खाली एति जण आकु जदी एक्सप्लेन करबे ये सब गोटे लॉन्ग पैराग्राफ हो हैला कि आ गोटे एग्जांपल ला he ran like a hare down the street. He ran like a hare, hare down the street. देखा पहले हमें प्रकृति रे गोटे लोक केबेले गोटे ठेकुआ भलिया दौड़ी परिबन किंतु हमें जस्टा पोजीशन बा एक्सप्लेनेशन पाई कोन करू हमें सो मोटो गोटे कंपैरिजन में सिमिलर बोले कंपैरिजन करिवे जोटा हाईलाइट करे देखो कि रैन लाइक ए हेयर डाउन द स्ट्रीट तो लाइक लागी वाली सेंटेंस रे हम ताको कोन कहले सिमिलर बुझेला त पिला जो सेंटेंस रे हमें दुईटा वर्तन एग्जांपल देले गोटे लागी थिला हमर कोन लाइक आज लागी थिला एबे जोटा डिस्कशन करले लाइक
तो ये दुईटा जाक रहिला कोन सिमिलर हमर एग्जांपल। नेक्स्ट लेखा पिले मेटाफर। मेटाफर METAPHOR मेटाफर। मेटाफर मेटाफर ओडिया कोन उपमा अलंकार पर हमें जोटा को प्लेसमेंट करू आज से लाइक सचात दस्ता जो लागि तो सेगुडा वाला सिमिली जो गुडा तो न लागि दिबो सेगुडा हमें ओडिया रे कोन करू रूप परमेय ठीक है घरे गले जदी ओडिया व्याकरण बोल थिबो हम तो भाबो नथियो ओडिया जदी टिके थिबो जस्ट ट्राई टू गेट थ्रू टिके खाली ओवरलोड करना हो जोटा हम बुझिया के टिके इजी रे लाइक इन ए फिगर इट इज ए फिगर ऑफ अ कंपैरिजन। It is a figure of a comparison without using like, as, just as, such as, etc. In which the two objects are completely different, in nature are identified. Example, what example like a play? The camel is the sheep of the desert. The camel is the sheep of the desert. The camel is the sheep of the desert. एटी हमें कोन हेले दीटा डिसिमिलर थिंग कैमल सहित हमें शेप भी केबे कोन कंपेयर करि परिबे कि करि परिबानी अब एटी देखो सब्स्टिट्यूशन किछि यूज करा जाय नि आज लाइफ इज सटाच कि बा जस्ट एज किंतु दो मान जे देखिबा कैमल को हमें कोन करछु फॉर्मूला जहां जे बोली कंपेयर करछु टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट जेते हमें कोन कोन कंपैरिजन करलो अब नेक्स्ट क्लास रे देखिबा जेते हमें पढिबा बिगुला का रीडिंग करिवो यदि कौनसी पिले मन पर नोट रे तमे किछि चाहबो चेंज पाइन वर्डिंग रे किछि चेंज किबा काहा को किछि कॉम्प्लिकेटेड लागेला काहा को आउट के इजियर चाहबो एटा री फॉर्मेट चेंज करे ने भी अब ग्रामर रे जे फिगर्स ऑफ स्केच डिफरेंट बुक रे डिफरेंट प्रकार देछि टोटली सरीला पर भी मध्य हम पर्सनल व्यू दबो सारे आउट के सिंपल एग्जांपल दियंतु आउट के सिंपल वे रे आरो मीनिंग टा एक्सप्लेन करंतु यानी जोटा बर्तन हमें दबो ओवरऑल समझ पे तापरे पर्सनली जोटा जरा चाहिए चेंज करिया छै नेक्स्ट क्लास में खाली पढ़ि के आसा तो देखिबा क्वेश्चन आंसर गुडा एके रिमाइंड करबे